प्रख्यात अभिनेता मिथुन चक्रवर्तीले मैनागढीमा जयन्त कुमार राईको समर्थनमा बिजेपीको रोड सोको नेतृत्व गरेका छन्। अभिनेता तथा बिजेपी नेता मिथुन चक्रवर्तीलाई आइतबार बागडोग्रा एयरपोर्टमा भव्य प्रवेशद्वार बनाएर स्वागत गरिएको थियो। उनले त्यहाँबाट जलपाइगुडीको मैनागढीमा बिजेपी उम्मेद्वार जयन्त कुमार राईलाई समर्थन गर्ने रोड सोमा भाग लिएका थिए। कार्यक्रममा उत्साही भाजपा कार्यकर्ताहरूले मिथुन चक्रवर्तीलाई न्यानो स्वागत गर्दै जयन्त कुमार राईको चुनावी अभियानलाई समर्थन गर्न गएका थिए। मिडियालाई सम्बोधन गर्दै चक्रवर्तीले पश्चिम बङ्गालको राजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तनको तत्काल आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। उनले काबुलीवालाको प्रतिष्ठित कथाबाट प्रेरित विषयगत दृष्टिकोणका साथ आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गर्ने योजनाको अवतरण गरेका छन्। এখনো তো শুরু করি দেখুন, এসব বলা খুব মুশকিল, আর আমি এসবে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি যে পশ্চিমবঙ্গ নিডস এ চেঞ্জ নাও, ইজ এনাফ। এটার আশা করি ক্যাম্পেইন শুরু করবো। এবার আবার নতুন শপথ, এবার বোধহয় কাবুলিওয়ালা দিয়ে শুরু করবো।